will operate for 247 seconds. Then the injection parameters will be achieved. मैं म्यूट जा रहा हूँ. -25 seconds. VSPP opened. -20 seconds. -15 seconds. प्रमोशन से 15 सेकंड की दूरी पर. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV-C58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV-C58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ. प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य. Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ. प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा. तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा. Sharp's tracking station currently tracking the flight. Ground lead strap-on separated. दोनों स्ट्रैप-ऑन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है. Presently the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथकन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन. First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है. प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है. There is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है. इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता है. इसकी पुष्टि हो चुकी है. ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है. Second stage performance normal. There is a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है. इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है. वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है. By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 161 kilometers and relative velocity of 4.5 kilometers per second. Current altitude close to 150 kilometers. Second stage performance normal. Plus 4 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ. Shar tracking station continues to track.
Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है. Third stage performance normal. The performance of third stage is reported to be nominal. The PS3 stage based on this HTPB based solid propellant. It carries 7.6 tons of propellant. यान की ऊंचाई निरंतर बढ़ती हुई वर्तमान में यह 170 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड. तृतीय चरण HPS3 हाई परफॉर्मेंस थर्ड स्टेज कुल 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जा रहा है. Shar and Port Blair tracking stations are currently tracking the vehicle trajectory. Third stage performance normal. During the operation of PS3, the rocket gains an altitude of 45 kilometers. Relative velocity increases from 4.5 kilometers per second to 7.2 kilometers per second. तृतीय चरण में कुल 7.66 टन का प्रणोद होता है और इसका कार्यकाल 123 सेकंड का होगा. इसके कार्यकाल के पश्चात PS3 का कोस्टिंग फेज शुरू हो चुका होगा. सभी दर्शकगण यहां उत्साहित इस मिशन के सफलता के लिए अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण. Third stage action completed. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके पश्चात Taken ही in combined hosting for approximately 200 seconds. ओके, इसके आई एम साथ बैक. ही तृतीय तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्टिंग फेज. अभी लंबा कोस्टिंग फेज चलेगा There's a confirmation of एंड मुझे हर बार performance by पूछा जाता है कि PS3 कोस्टिंग stage फेज क्यों and करते हैं currently the thrust एंड देन मैं हर has बार been सेम removed, जवाब देता हूँ. but बट जो नए हैं the vehicle उनके is लिए coasting with the PS3 still intact. The कोस्ट separation of PS3 has कोस्टिंग not फेज yet के taken place. मल्टीपल रीजंस है. एक तो ऑफ कोर्स Performance normal. आई चीज अच्छा नॉट श्योर कोस्टिंग फेज 200 सेकंड्स तक जारी रहेगा. उसके पश्चात कि तृतीय क्या चरण को ओएस यान से यहाँ पृथक कर दिया डिस्कशन चल रहा है जाएगा. कौन सा ओएस है ये The combined coasting ऑपरेटिंग continues सिस्टम. for 200 seconds. एनीवेज हाँ, Thereafter, the एक तो separation of PS3 के PS3 साथ takes क्या है, place, but PS4 ये जो continues स्टेज to है coast for थर्ड another स्टेज 400 ये एक seconds. सॉलिड स्टेज है. ठीक है. एंड सॉलिड स्टेज का क्या होता है, यू डोंट कंप्लीटली बर्न इतने बड़े लेवल पे. देयर इज समथिंग कॉल्ड During the टेल ऑफ coasting phase of थ्रस्ट. flight, the relative मतलब velocity reduces from जलने के बाद भी 7.2 थोड़ा kilometers बहुत per थ्रस्ट second to रहता है जो 6.2 आ रहा है अभी भी, kilometers per second, और वो and डेंजरस हो later सकता है close to 400 अगर kilometers आपने सेपरेट increase किया अभी will be observed in एंड altitude. सिग्निफिकेंट टेल ऑफ थ्रस्ट है, देन वो आके वापस क्रैश करे शायद आपके स्टेज 4 के साथ. विभिन्न खगोलीय ये एक रीजन हुआ. सेकंड रीजन ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आपका रॉकेट कंप्लीटली बर्न करते रहना चाहिए. आपका शायद ऑर्बिट के सर्टन रिक्वायरमेंट्स हो जो एक डिलेड प्रक्रियाओं द्वारा बर्न लगेगा. बट कोस्टिंग फेज तो होगा. ये टेल ऑफ थ्रस्ट के लिए एक मिनिमम कोस्टिंग फेज हमेशा होगा. उसके बाहर और भी टाइम लेता है, देन वो ऑर्बिट के ऊपर डिपेंड करेगा. प्लस अगर आप अभी ऑल्टीट्यूड देखो, अच्छा अभी तो काफी आउट ऑफ एटमॉस्फेयर गया है तो अभी उतना ड्रैग का इशू नहीं है. बट जब आप इतना कंबाइंड मास लेके जा रहे हो तो आपका मोमेंटम भी ज्यादा है. बट इस केस में उतना फर्क नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बाहर है एटमॉस्फेयर के. बट 100-150 तक डिसेंट टिल एटमॉस्फेयर होगा. बहुत कम बट होगा. इस उपग्रह का कुल भार फ्रोडो बैगिंस, 69 केजी है. थैंक यू भाई अपग्रेड करने के लिए. बैगिंस, ये कोई जोक है क्या विच आई एम मिसिंग? आई होप नॉट. रोहन भाई वी वांट वन वीडियो ऑन दिस. हाँ भाई आई एम वर्किंग ऑन इट. इमीडिएट नहीं होगा वो. में लगभग 145 केजी के वैज्ञानिक आई सॉ वीडियो सिंग इसरो विल बी लॉन्चिंग 50 मिलिट्री. एनी आइडियाज व्हेन? 5 साल की बात हो रही है.
अंतरिक्ष प्रयोग कार्टोसैट 3 का नाम दिया अलग गया अलग है। लेवल्स पे अलग अलग सीरीज होंगी। कार्टोसैट एक सर्वप्रथम लेवल पे, पोयम PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का माइक्रोस्ट्रेट्स एक सफल लेवल पे। प्रयोग 30 जून 2022 को PSLV C58 5 साल के द्वारा प्लान आई थिंक, देखा राइट? गया था। 5 ईयर पे। फिर 22 अप्रैल 2023 को Why ISRO not make new rocket? trial They are द्वारा making in पोयम GLV. 2 का प्रयोग भी हमने देखा। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पोयम 3 के प्रयोग किए जाएंगे। Third stage separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है। Vehicle in separated hosting for approximately 425 seconds. Plus 10 minutes. ये कितना तृतीय फिर चरण बहुत के टाइम वितरण चलेगा के ये। पश्चात चतुर्थ चरण के प्रज्वलन में अभी समय है और इस 6-8 दौरान minutes. PS4 का कोस्टिंग फेज जारी है। यह करीब 400 सेकंड तक जारी रहेगा। Is astrobiology a good option, Tejas? Depends. I mean, देखो हर फील्ड में if you are really good at that field is Is good. currently I mean, आप not you'll operational, succeed. though it is in the coasting phase, which will continue for So up to 425 you. seconds in all. नासा प्लस इसरो कोलैब सैटेलाइट कब लॉन्च होगा? निसार सैटेलाइट इस साल लॉन्च होगा। उसकी फाइनल टेस्टिंग चल रही है। The PS4 इसी stage, when मंथ it ignites, GSLV will Mark continue 2 to का work लॉन्च है एक for और, विच हैज टू सक्सीड 247.5 seconds. एंड लास्ट Thereafter, वन the सक्सीड हुआ, ignition, तो ये दो the injection सक्सीड हुए parameters तो of देन the होगा spacecraft नेक्स्ट XPoSat लॉन्च में निसार। will be achieved. हाउ इसरो मूव दिस रॉकेट्स टू लॉन्च पैड? मींस ट्रक से भाई, After दिस ejection लिटरली of अ the ट्रक primary पुलिंग। satellite, एक PS4 has पेडेस्टल है yet जिसके ऊपर another एक ट्रक है जो पुल करता है। milestone to accomplish. It lowers to an orbit of Good solutions 350 are simpler kilometers. than you think. Like After everything XPoSat doesn't require injection, over this engineering. orbit will be at 9.6 degrees inclination, which is achieved through 2 restarts. These maneuvers are expected to take 83 minutes from the XPoSat injection. Do you know any other language Once other in the than new Hindi, orbit, English? I know Once in the Konkani, new orbit, I know PS4 will Marathi, be I know subjected to Hindi, I know passivation by English. venting remnant propellants and depressurizing the stage tanks. Thereafter, the control of stage is transferred to Poem Avion. Which launch is more special for you in 2024? Engineering Thereafter, wise तो payloads for गगनयान Poem, 7 of which hopefully are हो। finalized through in space. अरे मेरे को Among एक the डिस्कस करना था payloads आपसे, that Plus 12 minutes. अब Poem इतने लोग हैं has, तो। मेरे को ना the रिसेंटली वो radiation बहुत shield of the खुजली है, satellite मेरे को वो module लेना है, मेटा RSEM क्वेस्ट is 3 designed by a firm called जो है ना Take VR Me to Space for VR का। evaluation of effectiveness of एंड आई ISRO हैव launches. सम ऐसा कुछ यूनिक Secondly, आइडियाज है have मेरे an पास, engineered satellite or कंटेंट VSAT आइडियाज। for solar मेरे को डेवलपमेंट irradiance वगैरह उस पर करना and है, ये Ravi वो अलग बात Notice है। from LBS Institute of मल्टी स्क्रीन Technology, वगैरह Pune. स्ट्रीम करना है तो इट्स Third परफेक्ट। payload is an पर मेरे को ना amateur जस्टिफिकेशन satellite नहीं मिल रहा खुद के लिए। VSAT-O from लाइक KG Somaya इट्स Institute of ऑलमोस्ट 50K। Technology. Fourth मैंने payload मेटा is वालों से a बहुत VSAT कांटेक्ट करने CubeSat ट्राई किया called Green Impulse कि Transmitter from कोई रिव्यू यूनिट वगैरह भेज सकते हो InSpace क्या, City या Space वैसे कुछ Labs तो, Private या Limited. स्पॉन्सर या वैसे कुछ, Leap TD from Dhruva Space बट Private किसी ने Limited to नहीं दिया उतना demonstrate भाव। subsystems for अरे यार microsat. गूगल इंडिया ही बेस्ट है यार, गूगल Two इंडिया payloads are का there from टेस्ट अलग है। Telex लाइक Aerospace वो अकेली Private बड़ी Limited, ब्रांड है which are named Rudra जिसने चैनल को Z13 भाव दिया है। HPGP and RP200. जिसने भी गूगल Three more इंडिया में मेरे को payloads are रेफर from किया ISRO. 2 साल One पहले, आई from मीन 2 साल से उन्होंने 3 वीडियो स्पॉन्सर किया, Physical विच इज Research गुड, एंड दे Laboratory, आर द ओनली स्पॉन्सर, मैं और called किसी और Test से एक्सेप्ट भी नहीं Experiment. किया। Two more from Vikram Sarabhai Space Center. बट हाँ, One will be called as अगर आप Fuel Cell Power System 1600 लोग में and कोई the मेटा other is का एम्प्लॉय है silicon-based high energy तो वहां थोड़ा power ये कर system. दो, मतलब लगा These are दो, the payloads from ISRO. क्या बोलते हैं उसे, कुछ कहते हैं ना इस वर्ड को, जहां भारत में सभी नववर्ष के स्वागत के लिए जो जश्न भी और है। मनोरंजन में लगे हुए थे। वाई वी इसरो के डिडेंट, वैज्ञानिक अगर और मुझको एक अच्छा अभियंताओं के सवाल है, प्रवचन के वाई लिए वी वहां डिडेंट जुटे हुए गेट थे। इक्लस फ्रॉम अदर उनकी कंट्रीज? गतिविधियों इक्लस को मतलब अंतिम रूप एनवायरमेंट देने में कंट्रोल एंड लगे लाइफ सपोर्ट सिस्टम, सफल अच्छा मिशन हुआ नहीं मिला, ISRO बिकॉज आवर भारत के फ्यूचर मिशन वैज्ञानिक बहुत डिपेंडेंट है इस पे, सूचना आराम खगोलीय एंड इट्स संबंधों गुड कि और हम बढ़ाने खुद के से इंजीनियर उद्देश्य कर से रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ISRO उसके लिए, मेरे को आई होप किसी से पूंजी बात में करने मिले रिगार्डिंग द होल इंजीनियरिंग अराउंड इक्लस। कार्यरत हैं। बट मैं बहुत वे श्रीलंका, श्रीलंका फाइनली डाल दिया उन्होंने ग्राफ में। श्रीलंका हमेशा मिसिंग होता था, भी डाल दिया। नूब दिन सेटिंग, हाँ सेटिंग नहीं, और सेटिंग के बजाय और कुछ वर्ड है, लाइक वो पहचान से ये करवाना और जो भी है। एक्सपोसेट के प्रक्षेपण बट हाँ, अगर कोई मेटा इंडिया में किलोमीटर अकिलस डिवीजन में
जानता है तो थोड़ा और सापेक्ष गति सिफारिश 6.6 यस किलोमीटर प्रति सेकंड। LO707 सेनपाई सिफारिश है वो आधा अर्जी नहीं है एस्ट्रोवर्ट सिफारिश इज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर हाँ इस उग्र एक्सपोसेट के दो मुख्य जैक लगा तो विभाग हैं पोलिक्स, यह 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉनों और रिफरल 4 इंग्लिश से वर्ड हुआ मैं 20 हिंदी वर्ड प्रोटॉनों के लिए एक एक्सरे ध्रुवण मापी है। इस निदभार को यूआरएससी और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तिगड़म सेटिंग इस लगाना यंत्र में एक कॉलीमीटर, एक प्रकीर्णन और 4 एक्सरे अनुपातित काउंटर डिटेक्टर लगे हुए हैं। इस प्रकीर्णन को कम परमाणु द्रव्यमान वाले पदार्थ से बनाया गया है जो आने वाली ध्रुवीकृत एक्सरे का श्रीलंका फाइनली आ गया है, उनकी इसमें ताकि एक समय में हमेशा गायब होता था वो इस कॉलीमीटर के अगर आप द्वारा देखो तो वो लॉन्च 3 कितना वोल्ट की साइडवर्ड था बिजली देखो से सीमित किया गया है बिकॉज इट्स गोइंग इतना लो ताकि समय इंक्लिनेशन में पे जा रहा है बिजली वो स्रोत उज्जवल हो सके। इस नितभार के 5 सालों के जीवन काल में 40 चमकीले खगोलीय स्रोतों का प्रेक्षण करने की अपेक्षा है। यह मध्यम एक्सरे ऊर्जा बैंड का पहला नितभार है जो ध्रुवण मापन के लिए समर्पित है। इसके अलावा एक अंडमान गायब एक एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग नितभार है जो एक्सपोसेट में जा रहा है। अंडरस्टैंडेबल देखो एट दिस पॉइंट वो बहुत ऊंचा है इन सब ज्योग्राफीज के ऊपर बट आई थिंक कुछ लोग स्टिल पैनिक करेंगे बिना मतलब कंट्रोवर्सी हो गई सब को इस्तेमाल करते हुए निरंतर उत्सर्जन में वर्णक्रमीय स्थिति परिवर्तन, लाइन फ्लक्स, सैट इज रोटेटिंग स्लाइटली पहले भी सैट 8 से का 15 थोड़ा किलो या इलेक्ट्रॉन तो वोल्ट्स रेंज में उत्सर्जन नॉर्मल इंड्यूस की स्पिन होगा अवधि में या तो दे प्रदान माइट कर बी सकता पॉइंटिंग है। इट Vehicle performance normal. बनी व्हाट लॉन्चेस आर शेड्यूल्ड फॉर दिस ईयर पृष्ठभूमि को कम करने के लिए एक्सेस स्पेक के एग्जैक्ट नहीं क्षेत्र पता को बट कम कुछ किया गया है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होंगे अभी इनसाइड जाने वाला है जो मेटेरोलॉजिकल स्रोत सैटेलाइट है जैसे वेदर एक्सरे सैट पल्सर, ब्लैक होल, जनवरी में मैग्नेटिक जीएसएलवी के फील्ड, ऊपर न्यूट्रॉन स्टार और फिर मैग्नेट्रॉन होपफुली आदि खगोलीय स्रोतों स्पेडेक्स का लॉन्च होगा प्रेक्षण कर सकेगा। गगनयान अनक्रूड होपफुली होना ही चाहिए इस साल फर्स्ट वाला होस्टिंग फेज समाप्ति की ओर। निसार होगा आप ये जो नीचे Stage engine ओके started. इग्नाइटेड There's a confirmation that the fourth आई stage नो has commenced आपको its पता है बट operation. स्टिल बोल रहा हूँ ये जो We नीचे are पिंक लाइन है वो प्रोग्रेस बार है मिशन का we are 17 minutes into the launch. Current altitude एंड आई एम सॉरी मुझे पता है सब लोगों ने 6,160 मीटर्स पर kilometers. सेकंड कर बोला था Stage performance normal. ये वेलोसिटी को मैं भूल गया चतुर्थ चरण तो मैं आज जो रात कि तक वो कोड चेंज तरल कर दूंगा आधारित इंजन है एमएमएच होपफुली नेक्स्ट मिशन पे ना हो ये पर मैं वापस बोलूंगा ऐसा लग रहा है यह बट हाँ 14.66 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इसमें ऐसे 2 इंजन लगे हुए हैं। रचित तनवार जीएस प्लीज गिव अ टूर ऑफ योर सिटी इन वर्तमान सिटी ऊंचाई स्काईलाइन 315 यार मैं बहुत किलोमीटर बड़ा सिटी स्काईलाइन सापेक्ष प्लेयर हूँ पर गति मुझे नहीं पता मेरे ऑडियंस में 6.7 इंटरेस्ट है कि किलोमीटर नहीं प्रति सेकंड। चतुर्थ चरण व अंतिम चरण है बट जो हाँ मैं तो मतलब दो 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 उपग्रह की हजार अंतक्षेपण घंटे आई की थिंक तो स्थितियां खेला ही होगा प्राप्त कर मिनिमम उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित करेगा। सर व्हेन इज योर नेक्स्ट वीडियो कमिंग अभी माइंड में 2-3 वीडियोस चल रहे फिलहाल और सब भी Fourth हाफ stage is प्रोग्रेस based हुआ on है liquid propellant. The propellant loading is दिखता है 1.6 tons. The fuel is monomethyl hydrazine and oxidizer is mixed रोनित राणे oxides of nitrogen. इंडिया में स्टारलिंक जैसा प्रोजेक्ट कौन कर सकता Presently, the है इसरो ही tracking कर सकते हैं stations इतना पैसा in उनके पास ही है Brunei and Biak are tracking the launch vehicle. व्लॉग्स ऑन जीएस शून्य चतुर्थ चरण को यार फेज व्लॉग्स और एक्चुअली ना बहुत टफ है सेगमेंट एडिट मॉड्यूल करने के रूप में भी मैंने इस्तेमाल लास्ट किया टाइम वो जाएगा, एक्वेरियम का किया था क्योंकि यह कक्षा में कुछ दिन उसी कक्षा इतना में एफर्ट रहते हुए मैं एनी डे विल डू कॉम्प्लेक्स 3D एनिमेशन 2D एनिमेशन एंड मेक अ कॉम्प्लिकेटेड वीडियो बट एक दिन बैठ के व्लॉग नहीं एडिट करना एक्सपोसेट उपग्रह का प्रक्षेपण क्योंकि हम 650 मिशन किलोमीटर की एंडिंग चक्राकार नियर कर कक्षा रहे में हैं किया जाना है। अभय ब्रो शेष हाउ आर यू गेटिंग रियल चतुर्थ टाइम चरण स्पीड को एंड ऑल्टीट्यूड बंद कर दिया जाएगा नहीं तथा नॉट फ्रॉम एन कुछ समय एपीआई मैंने बाद पुनः एक्सप्लेन किया है प्रज्वलित इसरो कर ब्रोशर पब्लिश करता है यान की कक्षा को कम किया जिस जाएगा एंड देन मैं और वो नंबर्स लेके 650 एक्सट्रापोलेट किलोमीटर कर रहा से हूँ 350 किलोमीटर की कक्षा पर लाया जाएगा तथा यहाँ ऑर्बिटल तो मैंने एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर का वीडियो बनाया संचालन है किया जाएगा। अगर किसी को देखना है ये नीचे का इंटरफेस कैसे काम करता है वगैरह वगैरह व्लॉग एडिटर रख लो नहीं भाई एडिटर्स एक्सपेंसिव अच्छे एडिटर्स स्पेशली
सिटी स्काईलाइन्स 2 खेले भैया? हाँ, यस ऑफ कोर्स। सभी बेसब्री से इंतजार करते हुए कक्षीय स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह एक्सपोसैट को अंतक्षेपित किया जाएगा। Is ISRO working on rotating detonation engine? Not sure, but I know someone. I mean, किसी ने बोला मेरे को What who stage works in of this field PSLV currently कि QS डिफेंस के साइड पे कोई काम कर रहा है इसके ऊपर, इतना मुझे बताया। plus 20 minutes. प्लीज टीच ब्लेंडर 3D मॉडलिंग। भाई बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, किसी से भी पढ़ सकते हो। त्रिअक्षीय स्थिर कक्षीय मंच रिडंडेंसी के लिए तैयार किया अवॉइड गया करेंगे। है। इस मंच से कई महत्वपूर्ण और नवीन अंतरिक्ष प्रयोगों को कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें Why सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो कि 50 why एम्पियर आवर GSLV Mark II for बिजली Nisar को and not आवश्यक LVM3? करते हैं। क्योंकि वो इसमें रिक्वायरमेंट्स नेविगेशन परफेक्टली गाइडेंस फिट करते हैं, कंट्रोल कॉस्ट परिचालित वाइज हो या पेलोड कक्षीय वाइज। आवृत्ति नियंत्रण तंत्र जैसे अगर हम एवियोनिक्स तंत्र भी LVM3 लगे पे हुए भी हैं। करते हैं तो बहुत सारा वेस्ट होने का यह चांसेस है, बोइंग पेलोड की वैसा नहीं श्रृंखला करते। में तृतीय प्रयोग है। व्हाट अबाउट we are very HSLV close D3? to मैं भी the वेट कर रहा हूँ। scheduled XPoSat injection time. जी हाँ, लगभग कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब किसी भी क्षण एक्सपोसैट को कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। ओके, मिशन सक्सेस, ऑलमोस्ट देयर। चरण को सेपरेट होने पे सक्सेसफुल। निर्धारित रूप से बंद कर दिया गया है। Whose sat is Jio and Airtel using? Airtel तो Satellite injection conditions are achieved. I don't think एयर फाइबर is satellite based. एयर फाइबर तो टेलीकॉम पे बेस्ड है ना, नॉर्मल Eagerly टेलीकॉम में। awaiting the next event. इज इट? एक्सपोसेट का उपयोग क्या है? वो एक्सरे पोलराइजेशन स्टडी करेगा अलग अलग सोर्सेज का, एंड उचित स्पेक्ट्रोमेट्री अभिवृत्ति प्राप्त एंड करते हुए टाइमिंग। यान तत्पश्चात एक्सपोसैट को अंतक्षेपित किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य के प्राप्त होने के पश्चात प्रयोगात्मक क्रिया जारी रहेगी। ओके, एनी टाइम नाउ। Satellite परफेक्ट। separated. And there is a confirmation that the XPoSat satellite has been separated. अभी सेकेंडरी मिशन यह स्टार्ट सुनिश्चित होगा हो चुकी एंड है कुछ टाइम के बाद ये कि लोअर करेंगे 350 किलोमीटर पे, फिलहाल एक्सपोसैट को 650। सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। टाइटेनियम, वी आर ऑन टॉप ऑफ लॉन्च टेली नाउ, सीरियसली। इस साल के हाईएस्ट लॉन्चेस एज ऑफ नाउ इसरो है टेक्निकली। Phases of four-stage restart. After two phases of restart, PS4 stage orbit will be changed to 350 kilometer circular. The first phase PS4 restart happens in non-visibility period. The second phase of PS4 restart takes place in the visibility period of Trivandrum in orbit 2. During the non-availability period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. The non-visibility period is approximately 4,500 seconds. All the stations involved in operation shall continue in positions. Handing over to mission director. ओके, आपने ऑनबोर्ड कैमरे की मदद से देखा एक्सपोसैट और यह खूबसूरत पृथ्वी का नजारा। has injected XPoSat primary satellite into the desired orbit. We will be continuing the operations. Two more PS4 restarts are planned, and the POEM 3 operations will be following. Approximately, the T0 will come around 2 hours after liftoff. Thank you. अब इसके पश्चात हम आपको अध्यक्षीय संबोधन के लिए ले चलते हैं। ओके, अभी सोमनाथ सर की स्पीच में अभी नेक्स्ट लॉन्चेस का पता चलेगा, सो वेट। First launch mission for ISRO. एंड गेमिंग भक्त पूछ रहे थे इक्लस के वजह से डिले हुआ क्या क्या, पता नहीं। Data that XPoSat फर्स्ट मिशन पे फ्लाई भी हो रहा है कि नहीं पता नहीं हमें इक्लस। Congratulations, Team ISRO. Do stand by for the address by Secretary TOS and Chairman ISRO, Sri S. Somnath. We take leave from you. Goodbye. मैं म्यूट जा रहा हूँ। ओके,
So happy New Year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV-C58 has placed the primary satellite XPoSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6-degree inclination. And we'll be waiting for the exact orbital parameters that will just now come. And we are also waiting for the satellite to have its solar panel deployed. That also will come in a few seconds from now. From this point, the orbit of the PSLV 4th stage will be reduced to a lower orbit, where the upper stage of the PSLV, which is now described as POEM, PSLV Orbital Experimental Module, will carry out experiments with 9 of the onboard payloads. And that will take some time, and we will come back to listen to all of that, what happened in the POEM experiments little later. Meantime, let me also announce the orbit that has been accomplished, which is available through various routes. It shows excellent orbit, and the deviations from the targeted orbit is hardly just 3 kilometers in circular orbit of 650 kilometer, and inclination is 001 degree, which is one of the very excellent orbital condition. And yet another announcement is the solar panel of the satellite also has been deployed successfully. So with this, the new year has begun with the launch of PSLV. We have an exciting time ahead. Much before telling all of that, let me invite the mission director to have its words. Mr. Jayakumar is the mission director. Okay. Thank you, sir. I'm extremely happy to stand here to celebrate the grand success of the 60th launch of PSLV. As you all know, XPoSat is a space observatory, but what makes this mission more interesting is the host of new technologies that are getting demonstrated in the POEM-3 experiment. We have fuel cell, we have the silicon-based 10 ampere hour high energy battery, green monopropellant thrusters, amateur radio satellite service, and more important, a totally women-engineered satellite for the comparison of solar irradiance and UV index. This, I think, showcases women empowerment in the field of science and technology, and all the payloads, in fact, demonstrate the reforms that are currently sweeping the Indian space sector. But today's success has been made possible by the tremendous efforts put in by a whole group of people from Team ISRO, along with other stakeholders. This mission would not have been possible but for the wholehearted effort put in by various teams, the SDAs and SR agencies spread across different centers, starting from SDSC, URSC, STRAC, LPSC, IPRC, VSSC, IISU, LEOS, and also ISRO headquarters. I would also like to thank InSpace for acting as a nodal agency in identifying the payloads for POEM-3 and all the NGEs for delivering the various payloads adhering to our schedule. Let me also thank our industry partners for delivering quality products for the realization of the launch vehicle. Let me take this opportunity to thank Chairman ISRO for the mentoring and the guidance provided, and all center directors. Specifically, I would like to thank Chairman and members of MRR, FRR, LV, and ORC, Padmamar sir, Ashok sir and Shuja sir. They have taken extensive reviews, and all the DRTs for clearing the various systems, also the admin and the auxiliary services who have supported. I would also like to thank my own project team, especially Vehicle Director Damodaran, Associate Vehicle Director Joyce Jose, all the DPDs, the other team members, and the Project Management Office who has been effectively managing the campaign activities. Finally, I thank our family members for the support they provided to make our missions successful. Wishing all of you a happy and a successful new year. Good day. Jai Hind. Now the satellite director. Good morning all. As Chairman sir announced, I am happy to announce that satellite is placed in intended orbit flawlessly, and satellite health is normal. Solar panels are deployed and battery charging already started. And this is the unique mission, XPoSat. It is a unique mission, and this is first mission worldwide to have a study of polarized X-ray sources, and the second mission for polarization. So first time we will be this mission will give the polarization aspects of high energy cosmic sources and in medium energy band, and this will study magnetic field distribution in cosmic sources, and how magnetic field means originating, and
like alignment of these cosmic sources like यार ये black first holes time बात कर रहे and think. So it's quite this good for pulsar first time wind if he is. and sources and all these cosmic sources. So He's this probably would be smarter the than all of us. extreme Definitely. and experiment for our scientific community. Once this mission is commissioned, it will be very fruitful for scientific community worldwide. And I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Central Director URSC, all Central Directors for making this mission possible by their support and guidance. And special thanks to my former project directors, Sri Amreshwar Kennedy, Sri K. Suresh, and Sri Dr. Palani Murugan for leading this mission in different stages of realization. And special thanks to my project team, project executive across the center, and payload team from Raman Research Institute and the Space Astronomy Group of URSC for their relentless effort for making this mission possible and realizing on time. And my special thanks to entire review committee for their guidance and support throughout the mission. And special thanks to industry partners and URSC team for their invaluable contributions for these missions. Now we are waiting for successful commissioning of these missions, and I am really privileged and honored to be part of this mission. I thanks everyone, and I wish happy and prosperous New Year's to all of you. Thank you. I'll now request the key center directors who have contributed immensely for the successful mission of this PSLV XPoSat mission. So first let me invite the director of the VSSC. Very good morning and a happy new year. 2023 was the 60th year of first sounding rocket that we launched from Tumba. So 60 years of rocketry, and PSLV is turning 60, and what a great takeoff on this New Year day with the successful launch of PSLV-C58 XPoSat mission. So apart from the main satellite, already project director has mentioned about the other payloads. There are some important payloads like fuel cell, which we will be demonstrating in the POEM phase, that is the subsequent phase when PS4 is used as a platform. And that POEM fuel cell will have potential application in our future missions like space station. So I wish Happy New Year, as well as I congratulate the entire ISRO launch vehicle centers, especially Vikram Sarabhai Space Center and all other launch vehicle centers, and wish all the very best to the satellite team and all the payloads in POEM in the subsequent operation. Thank you very much. Good morning to all of you. Today it is yet another historical day for ISRO. We in ISRO has given a New Year gift to all the Indians across the globe, as today we have successfully launched the XPoSat satellite and 9 experimental payloads in the required orbit. And this is the 60th launch of the workhorse, the PSLV. As it was told when we are celebrating 60 years of first rocket launch, which happened on 21st November 1963. This is a major achievement for ISRO and the entire India. The performance of the vehicle, PSLV vehicle, was as expected and as predicted. Exactly after 21 minutes, it gave 25,300 km/h velocity and injected the satellite in the required orbit. And out of 60 vehicles, 58 vehicles, that is 96.7% is the success rate of PSLV. This is a great achievement. In this vehicle, further we are going to operate the PSLV 4th stage 2 times to accomplish and complete the mission. We have also first time placed very, very important payloads, as it was told. The fuel cell based 100-watt power generation system is placed along with 8 more important experimental things. All the vehicle systems have performed as expected and as predicted. As Chairman ISRO announced, the orbit dispersion was very, very minimal. And the propulsion community also can be proud. All the propulsion systems, including the liquid propulsion systems, have performed extremely well. As the Director of LPSC and Project Management Council, Chairman of Space Transportation System, let me take this opportunity to compliment and congratulate all the ISRO team members,
our family members, the partners from industry and academia, all our elders who have made strong foundation for us to perform extremely well. अरे ये on this वॉच occasion. सोमनाथ सर ने कौन And सा वॉच let me पहना also है? express Doesn't look like Apple our Watch. New Year greetings. Let all of us in ISRO continue this success saga to keep the organization high and contribute for the national growth and development. Thank you. Jai Hind. Good morning. From yesterday evening around 4:30 onwards, the world is celebrating the New Year with a lot of fireworks. And India has celebrated today the New Year with the largest rocket firework ever. And except India, nowhere else it is possible that on New Year's Day you have a rocket launch and an important satellite getting launched. So, and also as my friend Brindavan Mato mentioned, that this is only the second satellite to study the X-ray polarization and the black hole related this one in the whole of the world. And this also is an indicator that we are on the right trajectory to reach to be the first in many things in future. From the point of catching up with the world, now we are in the trajectory to start to lead the world. That is what this is symbolic today that has happened. As already mentioned, this is a unique satellite, first of its kind, where we have polarization as well as spectroscopy and timing measurements of the galactic X-ray sources studying. So this is going to bring out new science, and not only for India, this area of work is new throughout the world. There are not many people in the world who are working in this area and studying this aspect of the universe, and we are leap forwarding towards the leadership in this role in this area. And congratulations to the payload team, particularly the Raman Research Institute and the Space Astronomy Group of URSC for coming out with this excellent payload, and for our teams across the ISRO centers who made this satellite realization possible. And currently the operations team at both URSC and ISTRAC, supported by many other people around the world, tracking and tending to this satellite. And I am sure in the next 5 years this satellite is going to bring out outstanding scientific results. Wish you all of you once again a very, very happy New Year, and we will continue this journey of celebrating in a most purposeful way like this in future also. Thank you. Very good morning, respected Chairman and my dear colleagues. Once again, PSLV has delivered as promised and herald a very good new year to start in a successful note. And I also compliment the entire team of PSLV as well as the XPoSat team to have such a unique mission on such an auspicious day on first day of the new year. Once again, it also shows what we can do in giving to the humanity as a whole and to explore the universe of data related to black hole and all those things, which is a new, unique research, and able to integrate the payload from a research institution into this spacecraft and have a successful mission. And I wish them all the best. I also compliment the entire team across ISRO centers for putting such an effort during last 45 days, considering some of the weather conditions, and continuing with the launch campaigns, and also making all the solid motors and all the liquid engines in all the other centers to have successfully integrated, tested and complemented at SDSC Shah, and go ahead with this launch campaign and be able to do it as expected, as thought on the 1st January itself. I wish all the people, colleagues in ISRO and across nation and all their family members a very happy new year and have a successful one, and let us, as we told,
2023 is almost a watershed year with almost 8-9 launches, and we have to continue to do that and come with a very good impact both in research as well as in the coming missions. I wish you all the best, and once again wishing a happy new year. Thank you. Good morning to Chairman ISRO and all my colleagues here. It's really heartening to see that PSLV-C58 majestically lifting off and going in the right path. And all the stations across our network has tracked fantastically and provided very good data. And we are still awaiting for the following orbit to really see. I think Apple Watch ही लग रहा है अभी जितना closely दिख रहा है. Fourth stage getting into 350 kilometer. Apple Watch है वो crown है उसके ऊपर. It is going to be a really challenging event. Also जो पूछ रहे membership gifting, already being in orbit. I think नया option आया है but I can't find it. Is going very nicely. Panels have got deployed and further operations are in progress. And regarding XPoSat, already told, it is another brother of AstroSat, and it is going to be a real compliment to the scientific community to explore this universe and find many things which has not been revealed till date. So I compliment everyone to the PSLV project, to the satellite team, and also at Science Data Center we are ready to receive the XPoSat data and do the processing and provide to the community across the world. So we all wish the 2024 is going to be much challenging and further taking ISRO to greater heights. Thank you. Jai Hind. All the best. It's a great occasion, and Happy New Year to all of you out there. Our New Year gift to the nation, an excellent launch and an excellent orbit. Our heritage navigation system Resins has given almost an error of around 3 kilometers and in inclination 0.001 degree, which is truly world class. Kudos to the IASU team to have achieved such an orbit. The XPoSat, as was highlighted, it's a small in size but great in its capabilities to look at the start of the universe. And the Poem 3, which is a very inexpensive microgravity platform, I think it is one of the unique platforms in the world. I think no other space agency provides such a platform. And this is a platform that ISRO is giving to the NGEs and academic institutions in the country to test their ideas and technologies. And we are very happy to see that the academia as well as the industries are using this platform to test their technologies, which will be going into their future missions. So congratulations to all of you, the academy, industry, and the new project team headed by new project director Sri Jayakumar, and the entire ISRO team to have achieved such an excellent launch. Thank you all. Happy New Year. Let us have a great 2024. Thanks to all the directors of the centers who have contributed for this mission in various ways, building the rocket, building the satellite, and also providing the ground infrastructure for us to operate and make this mission possible. So congratulations to all of you for your excellent contributions, and all the team members of ISRO and also the partnering academia and institutions for making this mission possible. Now, all of you know that the mission was at a 650 kilometer, 6 degree inclination, and we could have done the Poem experiment in the same orbit. But as a responsible space agency, we decided to bring the fourth stage to a lower orbit so that its life of the stage in the orbit is much lesser, so that we don't create debris in that process. So that's why it has been brought down to 350 kilometers.
And in that orbit, we will be carrying out the experiment with the payloads as already been mentioned. We have an interesting fuel cell experiment, which is going to be one of the precursor to our future powering of space station and other areas when we have to have power generation on board. And the VSAT is the Women Engineered Satellite, which is going to be an excellent contribution from all the girl students who have built this spacecraft. And we also have the experiments sponsored by various non-governmental entities, space startups in India, powered through the in-space coordination process. So congratulations to InSpace for enabling all these payloads on board the PSLV. And we are going to have not only that, that this poem is going to be unique in that aspect that all these payloads are there, but we are also having a unique way of dumping the remaining fuel and propellant and gas in this stage with a different approach, which is again not going to be done for the very first time. And the entire platform of POEM is going to be stabilized using cold gas thrusters, which has worked in the last time very well. So we are looking for the orbital change, which will happen by the two firing of the engines and also bringing to 350 kilometer circular orbit. And after that, the POEM experiment will start. And our expectation is the whole process of this testing will be over in very short time, and we'll be able to declare this POEM payload successfully, maybe a course of 1 month or so. So possibly all of you know that the POEM payload has its own power generation capability with solar cells, batteries, and its own computers and commanding systems. So it's almost a full-fledged spacecraft supporting all of you to conduct experiments at very low cost. So it's once again an invitation to all the startups, budding entrepreneurs, students across the country to come and host your payloads on board PSLV 4 stage for experimenting and trying out your new ideas. So with this, let me close today's mission activities from the control center of Satish Dhawan Space Center. And we will be back with announcements through our social media platforms for what happened in the POEM and what type of results are come out. Wait for that. And this year just began, and we are going to have many launches, and 2024 is going to be the year of Gaganyaan. As you already know, the TV-D1 mission has just been over last year, and this year we are expecting 2 more such test flights of the test vehicle, followed by the unmanned missions of the Gaganyaan program, and many more tests and experiments, which will be in very large numbers, which will not be coordinated from this control center. Similarly, we are going to have missions of PSLV, GSLV, as well as SSLV in the coming year, this year as well. So very hectic schedule waiting for all of you. And once again, let me wish a very, very happy new year 2024 for the entire family of ISRO, our partnering institutions, industries, and all our well-wishers. Thank you so much. Goodbye. Okay. Thank you everyone. मजा आया. Great start to the year. And I think we will also end this stream here. मैं end करना भूल गया. Bye bye.